लेके आएगा फिर लेते हम लेते हैं। सरिता दीदी लाइव में स्वागत है, वेलकम है। सीताराम सीताराम। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ दीदी। इस समय इसी में व्यस्त हूँ, बस वीडियो पर किसी के नहीं आ पाती हूँ। बस हमें 2-3 दिन का वक्त दे दीजिए, बस फिर पुराने अंदाज में आ जाएंगे। इस समय बहुत व्यस्त रहती हूँ। हाँ है। हम भी व्रत हैं दीदी। आज 4-5 दिन हो गया हमारे चैनल पर गाना भी नहीं जाता है, ना ही शॉर्ट वीडियो जाता है। ठंडी बहुत पड़ रही है ना? हाँ दीदी, ठंडी तो बहुत है। थोड़ा भगवान ने आज दर्शन दिया था। भगवान कृपा किहिन, कम से कम इतना कृपा कर दीहिन कि तिल और चावल दोनों सूखी गवा, उतने काफ़ी है। नहान खत्म हो जाए उसके बाद चाहे खत्म हो, ठंडी धूप निकले उसके पहले तो वो में ना अंदाज है। दस्ताना शायद झोरम रखा है, तो काहे दस्ताना लगावे जाते हो? भी काम पड़ा है। टोपिया को वही ना देखे। ये भी तेल भूजे जाई थब। हमारे यहाँ तो ठंडी नहीं है। क्यों दीदी, आप कहाँ से हैं? हमें ये भी नहीं पता है अभी। दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत आपकी ठीक हो गई? हाँ सही बात कहा जाता है। मुंबई में ठंडी कम होती, तब तो आपका सुकून है। क्या होगा? देखो ऋषभ से बता दे, जाए ना बगैर हाथे में कुछ नहीं।
अच्छा दीदी, एक दिन आपके चैनल पर किसी और दीदी का गाना पड़ा था, तो उन्हीं दीदी ने कहा कि किसी कारणवश दीदी वीडियो नहीं डाल पा रही हैं। शायद उसी दिन से हम आपके चैनल पर गए भी नहीं हैं। तो हमने कमेंट किया था कि दीदी कैसी हो, बस उसी से हमने थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि शायद दीदी की तबीयत ख़राब होगी। तो कमेंट किया था और लिखा भी था कि दीदी जवाब ज़रूर देना। फिर उसी दिन से हम किसी के चैनल पर समय ही नहीं दे पा रहे हैं, तो कमेंट भी नहीं देखा। इस समय ना ही कमेंट देख पा रही हूँ, ना ही गाना पढ़ पा रहा है, ना ही किसी के चैनल पर समय दे पा रही हूँ। दीदी हमने चैनल नहीं देखा है, किसी के चैनल पर इस समय हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें नहीं पता है। आज चौथा दिन है। आज मैं आपका कमेंट देखी। अच्छा, मतलब हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो सोचा हो सकता है दीदी ने दिया हो जवाब, हमने देखा नहीं, क्योंकि इस समय लाइव ही चलता है हमेशा। वैसे कहीं मौका मिला थोड़ा तो गाना शॉर्ट वीडियो को कल शॉर्ट वीडियो तो पड़ा था, परसों भी 2 डाला था, बस लॉन्ग वीडियो तो बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, ना ही किसी के कमेंट का जवाब दे पा रही हूँ। सोच रही हूँ किसी तरह मंजिल तक पहुँच जाए, थोड़ा परिश्रम कर ले। तो अब ठीक है भैया जी। इस टाइम बहुत परेशान हूँ बहन, आज हमारी छोटी बहन का ऑपरेशन है, रात को पथरी का। दीदी जब मुसीबत आवत थी ना, तो जब मुसीबत पड़ा था तो हमेशा वो कुछ दिन भरे के यहाँ हमेशा मुसीबत लगातार पड़ता ही जाता दीदी। ये वाला समस्या पथरी वाला तो बहुत ज़्यादा रहा था जी के देखो तो क्या है, कहीं गुर्दा में है तो कहीं कुछ में है। ये बहुत ज़्यादा समस्या दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही कयू है। सीताराम सीताराम, थैंक यू दीदी। अरे चलो दीदी, बुरा समय बहुत जल्दी कट गई। भगवान सब नेक सो राखे सबका। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कितने बजे तिलवा पूजा जाएगा दीदी, पता हो तो आप बताओ।
कितने बजे चंद्रोदय है। कोई लकड़ी बाहर से उठाए लाओ।
राधे राधे, खुश रहो। और बताओ कैसी हो? खुशी जल गया कहीं तो उधर से उठाए रखे थे ना रखा था। हो गया तैयारी, अब केवल समय का इंतजार है। पूरा कंप्लीटिंग तैयारी हो गई। तुम बहुत सुंदर हो, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बजे है पूजा? टाइम बताओ, मम्मी से पूछो फिर बताओ। पहले कपू को भरे तो है, एक पट्टा दे तो भरे जाती। अरे ये यहाँ से बाहर रखा था है, यही में है सबका जायज दे है, लागत है नहीं छलांग मारत थी लकड़िया। जहाँ जगह ना हो ना दे अंधेर तो लाइट कचवाया, दोसर के लोग कचवाया हो नहीं नहीं। हमारी हेल्प ना करो तो तार हेल्प होना चाहिए, बड़े हेल्प करे वाले हो। मम्मी पापा कहा न मानो तो हेल्प करो। कई बज गए 6:45 पर लाइट क्यों रहा अभी 44 में। आप वहाँ पे हो तो काहे मेरे घर तो चट चट हुआ है। कहूँ चरे ना है
बताइन तो हाय रे, हाय रे होत है। फिर ऐसा देखो तकिया
जय श्री राम।
सभी लोगों का लाइव में स्वागत है, वेलकम है। प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग। हम चाहिए